रुक जाओ। Good afternoon, guys. So we started the sensory filtering, right? देखो, so in your syllabus, if I'll show you, so there is a major 3 topics, that is your behavior, ठीक है? So behavior के जितने भी हमने types करे हैं, ठीक है? जैसे कि आपके innate, then complex, and then innate, then learning, and then complex. इसमें whatever we have mentioned, जैसे कि kinesis है ना, वो अलग से लिखा हुआ है, फिर इसमें imprinting वो अलग से लिखा हुआ है. So इसी के learning and memories, यही सारे आपके small topics है. तो आज जितना syllabus cover होगा, we'll do that. आज आपका fast है, तो आज जितना सिलेबस कवर होगा we'll do that. अदरवाइज आप लोगों को एक बुक मिली ना रीना माथुर की, है ना, उसमें से there's a very small topics, जैसे कि इसमें एक टॉपिक नहीं है, that is your social organization in primates, ठीक है? सो आज अपन सेंसरी फिल्टरिंग करने के बाद ये टॉपिक करेंगे, ठीक है? और ये नेविगेशन वी हैव ऑलरेडी डन दैट, रिमेंबर जब हमने बर्ड्स का माइग्रेशन करा था तो हमने नेविगेशन का टॉपिक करा था, ठीक है? सो एक और टॉपिक है ओरिएंटेशन, और छोटे से स्मॉल से टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल रिदम. कल आप लोग रीना माथुर की बुक लेके आना, ठीक है? सो वी जस्ट टेक ओवर दैट, एग्जैक्टली पेज नंबर के साथ विल टॉक अबाउट इट, ठीक है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंसेक्ट्स आपकी बुक में है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइमेट्स नहीं है. आई हैव सीन योर बुक्स, ठीक है? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमेट विल डू अभी आज, क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइमेट आप लोगों के पीवाईक्यूज में आया भी हुआ है. नहीं है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइमेट सिलेबस में नहीं है? यू श्योर? देखो देखो देखो, क्वेश्चन आया है भाई. प्राइमेट्स भी है, लेट मी शो यू. सिलेबस है आपके पास विश्व? देखिए इसमें है सिलेबस में इथोलॉजी यूनिट. है ना प्राइमेट्स? हाँ वही सोशल हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन इन द प्राइमेट्स, ठीक है? वही एप और बोला, मोनोगैमस, पॉलीगैमस, है ना, दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सोशल उसमें तो 20 पे आई हैव द प्रॉपर नोट्स आई हैव ऑलरेडी मेड फॉर द लास्ट बैच. इसमें अगर मुझे कुछ अपडेट करना होगा देन आई विल डू दैट, अदरवाइज 20 वाला नोट्स और आपके बुक में भी है, ठीक है? इसका टेंशन नहीं लेना. सो व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट वी हैव कवर्ड, द सेंसरी फिल्टरिंग. क्या लिखा लास्ट में? सेंड टू द ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Sensation is a basic data. Sensation is a basic data sent by the sense organs. Sent by the sense organs to the brain. And respond accordingly. The brain gives the signal. As brain gives the signal. Although, full stop, although sense organs also have their limitations, that's how they filter out much of unnecessary information,
unnecessary information. Filtering is largely, next point, filtering is largely achieved achieved by circuits achieved by circuit in which circuits in which neurons interact with each other, in which neurons interact with each other through through sympathetic and parasympathetic through sympathetic and parasympathetic responses via via synaptic connection. What is synapses? Axons. That is a synapses. Synaptic connections both through neurotransmitter and neuroinhibitor. Neurotransmitter and neuroinhibitors. Full stop. As a result of these interactions, as a result of these interactions, some features of the signals are enhanced and others are discarded at various level in the body. Next, make the heading mechanism of sensory filtering. Next, make the heading mechanism of sensory filtering. So yesterday we have talked about, जैसे कि suppose that ये आपका effector neurons है और ये आपका effector neurons है, ठीक है? तो एक one way this is coming to the signal like that and another way something like that, ठीक है? So ultimately you are responding at a particular behavior with response to any stimuli. So that particular behavior can be affected through various regions. Sometimes we talk about the CNS level, sometimes we talk about the PNS or the peripheral level, and sometimes even we talk about, जैसे कि yesterday we have talked about the sense organ itself, है ना? If you are continuously touching the hot object, after a time you'll stop feeling about it, ठीक है? So एक आपका सेंस ऑर्गन के लेवल पे हम फिल्टर आउट कर देते हैं, so that I do not need to send the signal, because when you are sending the signal to your neuron and coming it back, that will require the energy. कैटकोलामाइंस जो भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो इनहिबिटर्स होते हैं, है ना, if they are moving, आप लोग के मसल्स रेगुलेशन में पढ़ेंगे, so that your muscles क्या जो अपर लेयर होता है एपिब्लेमा, that is actually connected with that neurons, ठीक है? So यहाँ पे कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, प्रॉपर एटीपी यूटिलाइज होती है व्हेन योर मसल्स परफॉर्मिंग इन स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन. मसल्स में आप लोग का प्रॉपर आता है ये, दैट मींस यू आर यूटिलाइजिंग एनर्जी, है ना, एंड ग्रेजुअली यू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग एंड सेविंग दैट एनर्जी. तो पहला आपका सेंस ऑर्गन लेवल पे होता है, फिर आपका पेरिफेरल या मैकेनिज्म लेवल पे होता है और सीएनएस लेवल पे होता है. इसका कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं होता, सेंस ऑर्गन लेवल पे कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं होता, इट्स जस्ट हैबिट, क्योंकि हैबिट भी आपका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है. you'll stop responding because it become your habit, ठीक है? तो we will going to talk about the peripheral level and the CNS level. जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो आपका रिस्पॉन्ड होता है, that do not come through your CNS, that does not, है ना? जैसे कि नी जर्क जब आप कोई आपको नी जर्क में होता है, कोई किसी ने अगर थोड़ा सा भी हिट किया आपके नी पे, तो आप तुरंत वहां से तार रिमूव कर देते हो. दैट डू नॉट कम थ्रू द CNS, दैट कम थ्रू द PNS और द पेरिफेरल सिस्टम. ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट. Mechanism sensory filtering takes place. First peripheral filtering. First peripheral filtering. Dash various receptors present in the body filters out enormous stimuli
enormous stimuli, and it is done by receptors receptors mainly present on the organs, mainly present on the sense organs, mainly present on the sense organs because of their because of their mechanical ability mechanical ability to receive and transmit information, to receive and transmit information, which are often highly specialized, which are often highly specialized and and respond to a narrow range of stimulus, narrow range of stimulus, which they send to CNS, which they send to a CNS, and that's how they avoid regular events, regular events and unnecessary events in their environment. Give me 1 minute. Unnecessary events in their environment. Example. Talk provides a good example of visual filter in the periphery. Talk provides a good example of a visual filter at the periphery. So, while feeding, it just what happened, Anjali? Not the voices. Sorry. Frog provides frog provides a good example of visual filter at the periphery. So stop. While feeding, it responds it responds much more strongly to small dark colored objects dark color objects moving close to it moving close to it than
than to the large objects, or whole background, The scientist named Letwin has suggested that that light receptors of frog's retina that light receptors of frog's retina are connected to each other are connected to each other so as to form a receptor fields. Full stop. Some of these fields are specialized. Some of these fields are specialized to respond to the intermittent movement of of small dark and convex objects of small dark and convex objects. These are called Bagh detectors. Full stop. This type of responsiveness in frog produced by peripheral filtering. Next, central filtering. Next, central filtering. It is also called as as innate releasing mechanism. There are several cases where animals responsiveness to assign stimulus cannot be ascribed to its sense organs. Full stop. CNS filtering is done by different parts of the brain by selective attention or sometimes even the development of brain or its part according to the need in survival. Full stop. A lot of information is received by the brain. From peripheral sensory receptors, but not all are perceived
all are perceived. Full stop. Stimuli that reaches the respective areas of the brain, such as optic lobe, auditory lobes, olfactory lobes, etc., such as optic lobe, olfactory lobe, auditory lobes, etc., can get filtered out, if not important. The scientist named Burghardt, in 1971, has studied the feeding response of a garter snakes and water snakes. Feeding response of a garter snakes and water snakes in USA. Full stop. These animals feed largely on small fishes and worms, as they detect their prey, small fishes and worms, as they detect their prey by smell and taste, with the help of chemoreceptors, located in the pits on the roof of mouth, in Jacobson organ. Reptilians में हमने ये mention किया था ना, as a chemoreceptor or the sensory organs, that is it. In Jacobson organ. Full stop. The snake's tongue, full stop. The snake's apostrophe is tongue, on flickering, Flickering, out, picks up chemicals from air, and then tasted, full stop. He found out that different species of garter snakes show different levels of attack on cotton swabs dipped in a solution of chemicals extracted from its prey. Such preferences makes it
that certain chemicals response is directly connecting and receiving through CNS signaling while while full stop के बाद लिखना while normal cotton saps while normal cotton swabs was not responded by were not responded by these snakes specifically समझ आ गया सिंपल मतलब उनके पास क्या था दे डू हैव दैट जैकॉब्सन ऑर्गन के पास आपकी स्मेल और टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ठीक है सो उन्होंने जब एक पर्टिकुलर कॉटन सैप को सपोज दैट कोई ऐसा केमिकल्स which is actually found in their prey ठीक है जैसे कि मान लो किसी worms में कोई specific chemical पाया जाता है so when this cotton soap was dipped in such kind of chemicals these snakes were responding on this cotton soap because have that specific taste or chemicals which is present on that Jacobson organ and that is related with their auditory, olfactory, whatever the receptor present in their brain. But जब इसी cotton swab को not even a normal cotton swab किसी और particular chemical में dip करके solution में dip करके रखा गया, so these animals were not responding at all because that particular signaling or that particular thing was not filtered in their brain. ठीक है? गार्टर स्नेक्स देखो आई होता है गार्टर स्नेक्स में आई होता है वाटर स्नेक्स में भी आई होता है हाइड्रोफिस में बहुत प्रॉपर्ली डेवलप्ड आई होता है ठीक है बट द प्रॉब्लम इज बाय सीइंग ओनली दे कैन नॉट डिफरेंशिएट सो इसीलिए जितने भी आपके ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली डार्क में रहते हैं या जो जनरली मतलब इस तरीके के क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं उनके सेंस ऑर्गन ड्रॉप इसीलिए जब लोग रेप्टाइल्स पढ़ लेते हैं जब एम्फीबियंस पढ़ लेते हैं सो वी डू हैव टॉक्ड अबाउट द जैकॉब्सन ऑर्गन एम्फीबियंस में भी एम्फीबियन से ज्यादा भी आपके रेप्टाइल्स में मतलब स्मेल और सेंसरी ऑर्गन डेवलप होते हैं ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे मतलब बचपन में कभी आपने सुना हो दैट स्नेक्स डू नॉट फॉरगेट योर इमेज है ना हम लोग ने मडी की भी बात करी थी ना व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट सो एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग मडी और समथिंग सो दे एक्चुअली हैव अ वेरी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन एबिलिटी which keep that particular in their brain हम लोग किसी की स्मेल से नहीं पहचानते क्यों because compared to our smell our eyes are very much developed है ना but they recognize with their smell में part of 6% eyes होती है next I don't न्यूरोकेमिकल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड चेंज करके लिखो वेट अ मिनट स्टैंडर्ड चेंज करके लिख लो एपिथैलेमस which acts as a central switch board selects and send only necessary nerve impulses to cerebral hemisphere full stop when these nerve impulses arrive in different areas of cerebral cortex and interpreted their motor actions which travel through nerves to muscles to act so what does that mean जो first स्टैंजा हमने लिखा है that means this particular snake is not sending
एवरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, जैसे कि जब ये कॉटन स्वैप था, जब इसने इसको सेंड किया तो इसने सेंस ऑर्गन ने सेंड ही नहीं की इन्फॉर्मेशन, दैट आई गॉट इट कि दिस इज नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट। मतलब जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के बाद जो आपका जैकॉब्सन ऑर्गन है, फिर ये आपका सीइंग या स्मेल व्हाटएवर, इसने यहाँ पर ही नहीं सेंड करी, बात खत्म। फिर उसके बाद आता है आपका एपिथैलेमस इन योर ब्रेन, सपोज दैट इसने सेंड कर दी, पहले तो इसने इनिशियली मी जब इसने थोड़ा तो मतलब सेंस किया होगा ना दैट व्हिच टाइप ऑफ कॉटन स्वैब इट इज, तो इसने एपिथैलेमस तक तो भेजा कि ठीक है देखो व्हाटएवर इट इज, व्हेन इट सेंड द सिग्नल टू द एपिथैलेमस, एपिथैलेमस इज अ सेंटर स्विच बोर्ड, एपिथैलेमस के आगे ही आपके सारे न्यूरॉन्स और नर्व्स जाते हैं टू देयर डिफरेंट ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और व्हाटएवर द लोब्स देयर आर। तो इसने ही रिकॉग्नाइज कर लिया दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एट ऑल। तो इसने वन साइड की एनर्जी तो फिर भी वेस्ट करी, बट अनदर साइड की एनर्जी इसने क्या करी, सेव करी। ठीक है, सो दैट इज योर इवन इन द सीएनएस, दैट इज योर सेकंड लेवल ऑफ फिल्टरिंग। गॉट इट? कि पहली बार में तो आप जैकॉब्सन को ही नहीं भेज रहे हो, दूसरी बार में आप एपिथैलेमस को भेज रहे हो, बट देन इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द सेकंड हाफ। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, स्टैंजा चेंज कर लिखना। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, लॉरेंज याद है, कॉर्नार्ड एट लॉरेंज, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा था है ना, वही एच लॉरेंज, सिंपल लिख लो। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज, लॉरेंज एक आपका फिजिक्स में भी है ना, लॉरेंज फिनोमेना नहीं है? अकॉर्डिंग टू लॉरेंज there is a special mechanism, thank you, there is a special mechanism, there is a special mechanism which is responsible for stimulus, which is responsible for stimulus filtering and proposed, which is responsible for stimulus filtering and propose the term proposed the term IRM, IRM, innate releasing mechanism, innate releasing mechanism, which is a special neurosensory mechanism, which is a special neurosensory mechanism that releases the reaction, that releases the reaction in the form of nerve signaling, in the form of nerve signaling, and responsible for its selective susceptibility, and responsible for its selective susceptibility to a special combination, to a special combination of sign stimuli, SIGN, sign stimuli, sign stimuli, susceptible to special combination of sign stimuli, SIGN, sign, ये भी आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है, साइन स्टिमुलाई। मतलब क्या होगा इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइन स्टिमुलाई? जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट। yes go on Anushka, go on. So how many types of sign stimuli? Now read this statement. शॉर्ट नोट आ चुका आपका शाइन स्टिमुलाई पर। सपोज दैट सिर्फ ये वर्ड लिखा है, क्या क्या लिख सकते हो आप इसके बारे में? 10 मार्कर ऑनलाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइन स्टिमुलाई? व्हाट इट इज? जस्ट bifurcate the word and you'll get the answer. Just break this word, na? The one word is, the second word is. Now tell me what is the meaning of that. Online? नेहा, मनीषा, शाली, आप लोग ऐसा कर सकते हो, अनम्यूट करके माइक, यू कैन जस्ट टेल मी ना, तो सिंपल है। डिफाइन इट, यस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन स्टिमुलाई। क्या है आपका? एक्सटर्नल फैक्टर अकॉर्डिंग टू विच एनिमल इज रिस्पॉन्डिंग, ऑब्वियसली। what is the external factor which can be in the different sign form? Now tell me what can be the types of
हाँ 50% पे बोला गया है काम करने को, है ना, मतलब जितने भी वे से हम एनर्जी रिसोर्सेस कर सकते हैं। एक दिन पानी गया, आप लोग आपको क्या लगता है कितना लीटर पानी सेव किया होगा? मिलियंस टन्स ऑफ वाटर दे हैव सेव्ड, क्योंकि जो गवर्नमेंट की हर घर जल नल, घर से नल समथिंग काइंड ऑफ स्कीम है, इन विच हाउ मेनी वाटर दे प्रोवाइड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर दे प्रोवाइड, डू हैव एनी आइडिया? घर हर घर नल पानी समथिंग काइंड ऑफ स्कीम है ना, एक है स्कीम प्रॉपर, मतलब पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर। कितना है पानी इसमें? एनी गेस, जस्ट गिव मी अ रैंडम गेस। 1.2? ना ना, इतना भी नहीं, इतना पानी कहां से एग्जॉस्ट करोगे यार? निकाल तो आप, या तो आप प्योरीफाई कर रहे हो, या तो आप ग्राउंड वाटर एग्जॉस्ट कर। 55 लीटर ऑफ वाटर, 55 लीटर, जो आपकी आपके घर में टंकी होती है, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द फैमिली वैसे 55 लीटर पर ह्यूमन है, और अगर डिपेंड डिफरेंट एरियाज में तो 55 लीटर पर हाउस होल्ड। आप इतना पानी सप्लाई करो, 55 लीटर में ऑल तो कुछ नहीं होता है। जो हमारी नहाने वाली बकेट होती है, जब हम लोग शावर ऑन करते हैं, शावर में एक्चुअली पता है ज्यादा पानी जाता है, ठीक है, पता नहीं चलता, बट शावर में एक्चुअली पानी ज्यादा जाता है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। पानी का भी सबसे पहले पानी का भी क्राइसिस आएगा, क्योंकि ईरान को और सऊदी जो आपकी गल्फ कंट्रीज है, उसको इंडिया अच्छा खासा अमाउंट में वाटर सप्लाई करता है। सो इसीलिए तो ईरान, मतलब इट्स ऑल्दो इट्स वेरी नॉट वेरी एग्जैक्ट जो फॉर्म में आपका सोशल मीडिया प्रमोट कर रही है कि सबकी गाड़ी, सबकी शिप रोक दी और इंडिया की शिप जाने दी, दैट्स नॉट एक्चुअली द रियल सिचुएशन। इंडिया की शिप क्रॉस कर चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। या दैट काइंड ऑफ थिंग ओनली, ऑलरेडी बीन देयर। तो भाई उनको क्रॉस करना था, क्यों? उसमें ईरान का पेमेंट रुका हुआ था। जैसे मल्टीपल थिंग हमें जो प्रेजेंट किया जाता है वो बहुत एक टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है ना। कहाँ पे? इंडिया के पास? हाँ, मतलब वही है, गिव एंड टेक रिलेशन वाला है। व्हाई ईरान विल सपोर्ट इंडिया? थिंक ऑफ इट। ऑल्दो हाँ ठीक है, थोड़े से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, दैट्स व्हाई इंडिया हैव दैट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, दैट इज ट्रू। बट आप उसके दुश्मन की कंट्री, इजराइल इज ऑलमोस्ट एनिमी ऑफ ईरान, आप उसकी कंट्री में जाके कह रहे हो देन आई एम सपोर्टिंग आवर डीप connection with the Israeli people. Obviously, Iran will not going to like that. कोई आके पाकिस्तान में बोलेगा that I have a deep connection, I have deep feeling for the Pakistan. We are not going to like that. Because जैसे कि हम लोग जब पॉलिटी में पढ़ते हैं, so we do have that different kind of territory or that foreign relations. So कुछ relations आपके ऐसे होते हैं जिनको हम proper enemy territory में डालते हैं. Pakistan is openly included in that. China is not. चाइना के साथ हमारा एनिमी रिलेशन नहीं है, इधर हमारी कितनी भी स्क्रमिशेस हो चुकी हैं, दैट स्टिल चाइना वी डू नॉट शेयर दैट एनिमी रिलेशन विद द चाइना, बट पाकिस्तान के साथ हम प्रॉपर शेयर करते हैं। चाइना के साथ हमने कभी भी कोई भी ट्रेड बंद किया, कभी भी हमने एयर ट्रेड बंद नहीं किया है, बट पाकिस्तान के साथ वी ऑलरेडी डिड दैट, ठीक है। सो इट कैन बी द सिचुएशन ऑफ ओवरऑल रिसेशन, इसीलिए गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना। कोविड में भी सबकी सैलरी कटी थी, बट गवर्नमेंट जॉब की सैलरीज नहीं कटी थी, प्रॉपर आई थी। बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन नहीं अप्लाई होगा, दैट इज रिलेटेड विद द इन्फ्लेशन, है ना, एंड किसिंग रिव्यू कमिटी। सॉरी गाइस, मैम टिल नाउ द क्लास डिडंट गो। यस रोहित, आई नो मैम क्लास रुक गई थी आफ्टर साइन, या एक्चुअली वी स्टॉप्ड आफ्टर दैट, वी टॉक्ड समथिंग डिफरेंट, आई हैव नॉट डिक्टेटेड एनीथिंग, डोंट वरी। समझ आ गया? व्हाट, अच्छा, तो व्हाट कैन बी द साइन ऑफ, व्हाट कैन द टाइप ऑफ द साइन स्टिमुलाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइन स्टिमुलाई, तो समझ आ गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइन, कौन कौन से साइन हो सकते हैं? जितने आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उतने आपके साइन है। विजुअल हो सकता है, ऑल्फैक्टरी होता है, कुछ सुन के भी, दैट इज है ना, आई एम विस्परिंग समथिंग, दैट मींस आई एम ट्राइंग टू गिव अ सर्टेन काइंड ऑफ साइन टू यू दैट परफॉर्म अकॉर्डिंगली लाइक दैट। आई एम सीइंग समथिंग, है ना, मे बी आई एम सीइंग सम responses accordingly, I'll respond. I'm seeing some kind of disturbance, accordingly I'll respond, है ना। तो sign stimuli is just on the basis of your sense organ, that's it, nothing more than that, ठीक है। All the sign stimuli will do that. Next, right on. मुलर्स लॉ, इसी में इसी में कंटिन्यू करना है, चार्जर चेंज करके। आईएफएस में मुलर्स लॉ स्पेशली पूछा गया है। मुलर्स लॉ ऑफ a specific nerve gene of a specific nerve gene says that sensation perceived depends
on the part of nervous system, on the part of nervous system activated, activated and not, and not on the sense organ stimulation. तो मुलर्स लॉ क्या कह रहा है? what Muller says that क्या कह रहा है मुलर? What this law is stating is हाँ क्या कह रहा है कि एक्चुअली सेंस ऑर्गन कुछ नहीं होते. तो ही इज प्रॉपरली रिजेक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ sign stimuli. He's saying no, nothing is responding through the sense organ. Everything is just going to the brain. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो रिस्पॉन्ड करेगा कि ठीक है. एक्चुअली ही सेइंग दैट ब्रेन इज द मेन इंपॉर्टेंट. सो ही इज एक्चुअली सेइंग दैट कि पेरीफेरी भी कुछ नहीं होता है, इसीलिए इसको हम सीएनएस में कवर करते हैं. दैट मुलर्स लॉ. ही सेज कि रिस्पांस जो होते हैं वो एक्चुअली ब्रेन के थ्रू आते हैं, किसी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू नहीं. ठीक है, उन्होंने ये बोला दैट सेंस ऑर्गन्स आर ओनली टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू फिल्टर. गॉट इट? राइट डाउन. Example, the male of South American tree frog, the male of South American tree frog produces, ये एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल माना जाता है आपके सीएनएस का. produces कोक्वी sound that is a specific sound, that is a specific sound to attract the female, and also to repel other competing males. One of the student has written this example in the test series and explained it very nicely. So it is one of the good example. ठीक है? And repels. First off, इसमें लिखो. The tympanic membrane of male and female are adapted differently. As a male can hear only the co-note, and get warned, 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 and repelled, while females hear only qui note or sound. Just underline that, co or qui note / sound, and therefore get attracted to the male. First of all, these different sound receiving capability due to different frequencies of sound energy, as lower one that is 500 to 15 साउंड को किसमें मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को 1500 hertz. Lower one, that is 500 to 1500 hertz, is heard by female
in which qui sound produced, in which qui sound produced, while the higher note, that is 1500 to 3000 hertz, 1500 to 3000 hertz, heard by male, in which co sound is produced, in which co sound is produced. Stop. Although cut कर दो, just cut it. Although simple add-on, olfactory cells located on the antenna of male moth. Second example, olfactory cells located on the antenna of male moth can receive slash perceive only specific pheromones which are released by the females of the same species, which are released by the females of the same species, because full stop, because the pheromones of another species is filtered out समझ आ गया. फेरोमोन्स वाला तो एग्जांपल आप मतलब फेरोमोन्स इज एक्चुअली द रिसीविंग सेंस ऑफ द फेरोमोन्स ऑन विच द एनिमल रिस्पॉन्ड. ठीक है, फेरोमोन्स आपका एक प्रॉपर अलग चैप्टर है, ये डिफरेंट लेवल पे होता है. सो दिस इज ऑल्सो ऑन द लेवल ऑफ सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, फिर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पेरिफेरल में भी रिस्पॉन्ड करता है और सीनस में भी रिस्पॉन्ड करता है. तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर प्रेजेंट है या किस टाइप की एक्टिविटी इंड्यूस हो रही है थ्रू दैट पर्टिकुलर फेरोमोन्स. जैसे कि व्हेन यू कवर द फेरोमोन्स ना, आपके कल बुक लेके आना प्लीज ध्यान से, तो उसमें आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है. वी विल सी दैट. कल हम लोग बुक से देख के फिर हम लोग जितने भी पीवाईक्यूज हैं 2017 से वी विल डिस्कस इट इन द क्लास. ठीक है, सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ जितने भी आपके फेरोमोन्स हैं उनका देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पांस. और आपके क्वेश्चंस भी ऐसे आए हैं दैट फंक्शन ऑफ द फेरोमोन्स इन मे बी द सोशल डिफेंस. ठीक है, ऐसे करके आए जैसे कि फेरोमोन्स इज अ टाइप ऑफ केमिकल व्हिच इज इंड्यूसिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर. ठीक है, सो दैट विल कवर. सो फेरोमोन्स का एग्जांपल आपका हर जगह का है, बट कोई रिस्पॉन्ड आपका स्पेसिफिकली सीएनएस पे. क्यों इसमें ये क्या कह रहा है कि सुन तो दोनों लोग रहे हैं, बट दैट स्पेसिफिक जो नोट प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है या जो नोट रिकॉग्निशन एबिलिटी है, और इफ दैट अच्छा ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मेल है ना. अगर मेल प्रोड्यूस कर सक रहा है तो ऑफकोर्स सुन भी सक रहा होगा, बट स्टिल उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है, नॉट ओनली द प्रोड्यूसिंग एंड हियरिंग आर द टू डिफरेंट एबिलिटीज. तो उसकी जो प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है वो तो दोनों की है, बट ड्यूरिंग दैट हियरिंग टाइम मेल्स ओनली रिस्पॉन्डिंग, मेल्स ओनली रिसीव दैट काइंड ऑफ सिग्नलिंग. दैट मींस ये आपके सेंस ऑर्गन का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम इन योर सीएनएस. दैट इज प्रॉपर्ली कि वो आप सुन हर्ट्ज आपका जो फ्रीक्वेंसी है, जब हम लोग ईयर की फंक्शन पढ़ेंगे, टिम्पैनिक सेंस ऑर्गन तो आपका ईयर आ जाना चाहिए, दैट्स इट. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके बाद जब आपके एम्पुला बुला जो आपके साउंड को एनहांस करके पहुंचाती है, वहां का ये फंक्शन है. ठीक है, सो दैट इज रिलेटेड विद द ब्रेन, नॉट ओनली द पेरिफेरल और द सेंस ऑर्गन. ठीक, फिनिश्ड. चलो टेल मी द सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट मेक द हेडिंग सिग्निफिकेंस और ये टॉपिक क्लोज. Significance of sensory filtering. The animal can save energy. First, simple. The animal can save energy by not responding to unnecessary stimuli and increase their fitness level Next, the animal that practices stimulus filtering
may also be more likely to respond, may also be more likely to respond more appropriately, more appropriately and efficiently to the various threat, to the serious threats, to the serious threats, and not distracted, and not distracted by unimportant stimuli या unnecessary stimuli. ये वाला बिहेवियर आप लोग करते हो? जब एग्जाम आएगा तो आप लोग अननेसेसरी कॉल उठाना छोड़ देते हो ना? So that is a sensory filtering. ठीक है? क्योंकि आपको क्या करना है, मोस्ट एफिशिएंट वे में आपको एनर्जी रिस्पॉन्ड करनी है, बिकॉज योर ब्रेन हैव द लिमिटेड एरिया. सो यू विल, इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई परेशान कर, समथिंग लाइक दैट. अगर सपोज दैट आप एग्जाम प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में हो और मैं बीइंग अ वेरी गुड पर्सन आई एम जस्ट कमिंग एंड ट्राइंग टू टेल यू माय सैड स्टोरी और समथिंग लाइक दैट, दैट विल आल्सो, आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोसेस करता है. जितनी सीरियसली आप बात को सुनोगे या देखो, जिस चीज को आप जितनी बार रिवीजन करते हो वो ब्रेन को सिग्नल जा रही है कि ठीक है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, you have to keep in your conscious or some kind of permanent memory. We do have the permanent, the temporary memory. That's not only words, we do have actually that. Okay, so suppose that आप proper आपने अपना दिमाग लगा रखा है इसमें स्टडीज में, और मैं आई और सपोज दैट एनी रैंडम पर्सन विल कम और उसने वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं चाह रहा, उसने कुछ बस इंफॉर्मेशन आपको दी है और वो आपका ब्रेन क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है. नाउ द एनर्जी ऑफ योर ब्रेन, or better say in a very scientific manner, the neuron system of your brain channelizing the energy into different manner. ठीक है, इसीलिए एग्जाम के टाइम पे कभी सपने वपने नहीं आते है ना, बहुत अच्छी नींद आती है एग्जाम के टाइम पे, बिकॉज योर ब्रेन एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड. चुपचाप कुछ नहीं करो एग्जाम के टाइम में, सिर्फ सुबह लाइक 7 o'clock से 10 o'clock तक बैठ के पढ़ो या 7 to 11, देखो कितनी ज्यादा भूख लग जाती है. एक्चुअली सिर्फ आप बैठे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज योर ब्रेन इज कंज्यूमिंग दैट मच ऑफ एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट. The saved energy can better, next point है, the saved energy can better utilize in the reproduction process, and increase and slash maintain their population, and increase slash maintain their population. Next, it enables the animal to better adapt in changing environment, in more efficient manner, ठीक है. सेंसरी फिल्टरिंग में कोई डाउट तो नहीं अभी. नेक्स्ट शॉर्ट हेडिंग, छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे, साइन स्टिमुलाई. ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें शॉर्ट नोट्स आए हुए केवल, दैट्स इट. साइन स्टिमुलाई, इट इज आल्सो कॉल्ड as releaser or key stimuli full stop. They are those disturbances or external factors, या factors लिखो, external नहीं हमेशा. These are those disturbances slash factors which are capable of releasing fixed action pattern or consummatory behavior
of the animal, of the animal. Again, scale orange. किसी भी उसके कोई भी कॉन्सेप्ट इथोलॉजी का है, जस्ट पुट दिस हिज नेम. ठीक है, सब में इन्होंने काम कर रखा है. नहीं आ रहा है तो भी जस्ट पुट हिज नेम. ऐसे आप लोग पेपर में करते हो, पेपर 2 में, पेपर 2 में यही तो करते हो आप लोग, नहीं करते हो? कोई भी सजेशन पूछा जाए, सेंट्रल स्टेट, मतलब आई एम नॉट गिविंग दैट स्वीपिंग स्टेटमेंट, बट दैट इज वन ऑफ द थिंग. फर्स्ट ईयर में जैसे जब लिखने जाते हैं तो हम लोग सेपरेट सेपरेट कमिटीज याद करते हैं. सेंट्रल स्टेट में सरकारिया कमेटी है ना, दिस कमेटी, दैट कमेटी. बट व्हेन विल बिकम प्रो, वी यूज अकॉर्डिंगली. गवर्नर में भी वही कमेटी है, सेंट्रल स्टेट में वही कमेटी है, एंड एवरीथिंग. क्यों? बिकॉज in place of the normal statement when you are justifying it, that because every kind of political, जैसे कि मान लो पंचायती राज या फिर the governor issue, मेरे टाइम पे आया था क्वेश्चन आपका जुडिशरी का, जुडिशरी वाला प्रॉब्लम. एवरी सिंगल प्रॉब्लम हैव द काइंड ऑफ सजेशन, इधर यू वांट टू और नॉट. कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ सजेशन, देन यू हैव द राइट डिफरेंट स्पेसिफिक सजेशन. और अगर नहीं पूछा जाता है तो आप सजेशंस कहाँ लिखते हो? अपने चैलेंजेस जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपस में सजेशन कंक्लूजन में लिखते हो. So, मैं बोल रही हूँ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए. That will not be, justified. Why would you do that? But वहीं पे आप लिख दो ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, because as suggested by that सरकारिया कमीशन, है ना? That's a pro level to write answer. जब बहुत सारी कमिटीज याद कर लेना तब ये वाला फॉलो करना, not only 1 or 2. So आपकी जो फुल पेपर 2 की कॉपी होती है ना, वो ऐसे कमिटी और कमीशन से फिल्ड होती है. ठीक, चलो, इट्स अ चीट नोट. लॉ वाले का थोड़ा सा इसमें वो रहता है, ऑल्दो ज्यादा यूज करोगे तो दिस इज समथिंग सेलेक्टेड पर्सन, वन ऑफ दैट ही इज एन आईपीएस. उन्होंने मुझे ये चीज बताई थी कि इफ यू आर राइटिंग इन योर नॉर्मल जीएस पेपर्स आफ्टर लेवल ऑफ एक्स्ट्रा, है ना, एक सर थे, उन्होंने भी ये बात, मतलब ही इज वन ऑफ द वेरी प्रोनाउंस टीचर आल्सो. तो उन्होंने बात की थी कि जैसे कि सपोज दैट आप लोग साइंस के हो, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा, आप लोग इन्फॉर्मेशन उसमें डालोगे, ऑब्वियस है डालोगे, बैक्टीरिया ये वो. एक टाइम तक तो एग्जामिनर को समझ आता है कि ठीक है दिस इज अ गुड इन्फॉर्मेशन, बट आफ्टर सर्टेन लेवल उसको समझ आ जाएगी ये स्टूडेंट जो है वो इस बैकग्राउंड का है. सो वेन एवर यू आर यूजिंग योर इन्फॉर्मेशन, यूज दैट इन अ बैलेंस लेवल. तो जब आप एक्सेस इन्फॉर्मेशन लिखते हो, ऑफकोर्स वो आपसे रिलेटेड होगी, बट एग्जामिनर आपको एक लेवल पे ही मार्क्स देगा. अब आप लोग एजिटोबैक्टर और से फैंसी से नेम लिख के आ रहे हो, देन ऑब्वियसली ही गेट इट कि यू आर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड. एक डिफरेंट कमिटीज आपने सपोज अपने पूरे आंसर कॉपी में 4 से 5 कमिटीज लिखी, उतनी आपने प्रिपरेशन करी, उतनी मैंने प्रिपरेशन करी, सपोज, है ना. आई एम नॉट फ्रॉम दैट लॉ और दैट पीएसआई बैकग्राउंड, बट स्टिल आई कैन रिमेंबर दैट 4 to 6 कमिटीज, दैट इज गुड एनफ. ठीक है, but now if I'm writing every single committees and cases and every single question, obviously there is scope to write. I'm not saying there's no scope, there is scope to write, and that will frame a very good answer. But then examiner get to know, okay, he's not something normal, he's something with that kind of law option. ज्योग्राफी वालों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक नॉर्मल से आंसर में उन लोग अक्सर एक्सेस इन्फॉर्मेशन लिख के आते हैं. ठीक है, डू नॉट डू दैट. बट ठीक है, कमिटी वाला तो चीट नोट ना तो चलेगा ही. ठीक है, 4-5 कमिटी तो याद रखनी होती है. विल डिस्कस ड्यूरिंग द मेंस. चलो क्या लिखे? हाँ, के लॉरेंस who released firstly that a specific stimuli which he called the key stimulus as sign stimuli. Full stop. मतलब के लॉरेंस was first one to talk about the sign stimuli. इसका सिंपल मतलब इतना है. Ready note. Next, it is a part of stimulus. It is a part of stimulus configuration, comma. Generally, it is external. To the animal, and relevant to a particular response. Next, quite frequently one finds, या फिर ऐसे quite frequently an animal responding to only one special part of the array
only one special part of the array of stimulus of stimulus presented to them presented to them. It means that an animal responding in a non-reflex fashion comma, utilizes only the restricted aspect utilizes only the restricted aspects of the environment and ignoring the others. Next, make the heading essential features. Essential feature मतलब ignoring the others is a relevant part of sign stimuli. Ignoring the others, which is a relevant, shows the relevant part of sign stimuli. Shows the relevant part of sign stimuli. जिस पे वो respond कर रहा है सिर्फ वही. Next, essential features of the sign stimulus. First, configurational relationship. First, configurational relationship. Right now, sign stimuli must be presented. Sign stimuli must be presented in the right perspective. To elicit a response. Example: stickleback fish. Example: stickleback fish showing red coloration. On which the different organisms respond differently. On which the different organs respond differently, comma, must always be underside / ventral side of the animal. And shows must underside / ventral side of the animal shows different responses in different periods. What does that mean? That means simple. जो हमने एग्जांपल देखा था stickleback fish का, it's showing generally red color. So there is a red color has a different perspective for the different animals. ठीक है? So major इसका perspective होता है या तो इसका क्या होगा breeding purpose के लिए, है ना? When it is showing that specific red coloration on that specific monsoon or that spring season, ठीक है? That means it is for the breeding purpose. But if it is showing general, that means it is showing that this is a very high territorial fish. जैसे कि some of the dogs are very highly territorial, है ना? कुछ आप अगर animal आप suppose that some of the animals, some of the dog, if you will pet them, तो उनका ये होता है कि this is my territory. They will be very, protective for you because they will consider not because you are owner of that particular dog, but because they consider that you are under its territory and it's their responsibility to protect you. ठीक है? उसी तरीके से ये होते हैं टेरिटोरियल फिशेस. इनका ये होता है अगर ये नॉर्मल टाइम में शो करें, दैट मींस दे आर शोइंग दैट टेरिटोरियल बिहेवियर, डू नॉट ट्राई टू एंटर इन दैट. ठीक है? दैट्स व्हाई दिस इज द मीनिंग ऑफ. तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग है. एक पर्टिकुलर चीज को ही आप डिफरेंट वे में कॉन्फ़िगर करते हैं.
That's it. Next. Second type, a particular question या क्यू, a particular question or क्यू, insane stimuli, insane stimuli, a specific sign or cue, specific sign or cue has importance, has importance, critically, as they are responsible for, as they are responsible for specific behavior, specific behavior. Example, example, turkey hens, turkey hens, breeding for the first time, for the first time will accept their chicks, will accept their chicks or any object, or any object that makes a chirping call, that makes the chirping call, as they ignore, as they ignore visible stimuli, as they ignore visible stimuli. ठीक है, आपने डॉगी हेंस जो फर्स्ट टाइम रीड करती है, से सो एट दैट टाइम दे डू नॉट नो व्हाट इज द साउंड ऑफ देयर चिकन्स. ठीक है, सो कुछ भी अगर आपने एक मूविंग बॉल भी रखी है, स्टिल दे विल नॉट रिस्पॉन्ड. Or suppose that this is something very discriminatory practices in the turkey hens, because they are also social organization. They show that अगर इसके chicken ने मतलब after just birth, after just hatching out of the egg, अगर this chicken will not pronunciate any sound, this whole territory will not going to accept this chicken for whole of its life, क्योंकि विजिबल स्टिमुलाई इनको चाहिए नहीं होता. दे डू नॉट इवन रिस्पॉन्ड ऑन द विजिबल. और अगर आपने इनके सामने कोई एक मॉडल भी रख दिया है और वो सेम कोई भी साउंड चॉपिंग साउंड अगर प्रोड्यूस कर रहा है, सो दे विल कंसीडर दैट एज अ, एंड दे आर वेरी ऑफेंसिव. टर्की हेंस आर नॉट लाइक द इंडियन हेंस. ठीक है, दे आर वेरी ऑफेंसिव. तो ये उसको प्रोटेक्ट करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे. तो दिस इज अ क्रो और कोल को हम लोग ने एग्जांपल एक्चुअली दे रखा था. क्रो में कोई साउंडिंग नहीं है, दे क्योंकि उनका मतलब आप यू वांट टू रिलेट इन दैट सेंस बिकॉज़ दे डू नॉट डिफरेंशिएट. तो दैट्स अ कांसेप्ट ऑफ मिमिक्री. वी विल नॉट पुट इट इन हियर. ठीक है, उसमें ये नहीं. ऑब्वियसली जब वो बड़े होते हैं उसमें फिजिकल, वो तो सिर्फ उस स्टेज में है ना विश्वा, इन दैट एग स्टेज. या एंड अगेन द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी, because the female crow has said that okay, though she has only kept the 6 eggs, है ना, and coil just come and put that one egg in between their eggs. Cuckoo is a very clever, who that she does not kept his egg, her egg in that side में. वो अपना egg जो है वो सारे eggs के बीच में रखती है. So when the female crow comes and said कि I have only that much amount of energy, ये energy का utilization is one of the best example in your environment, in your ecosystem or whatever nature में. तो वो side वाला जो होता है वो गिरा देती है. कुक्कू नहीं गिराती, पता है. कुक्कू को पता है कि क्यों फालतू में ऐसा किसी का नेगेटिव लेना. तो फीमेल क्रो खुद आके ही अपना एग गिराती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एनर्जी इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट, दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट दे प्रोड्यूस. तो वहां पे मिमिक्री रखेंगे बिकॉज बोथ एग हैव ऑलमोस्ट सेम, या फिर एनर्जी कॉन्सेप्ट रखेंगे इसमें. नॉट. चलो नेक्स्ट राइट. ऑन द अदर हैंड, इसी में लिखो, ऑन द अदर हैंड डीफ टर्की hens, deaf turkey hens kills most of their chicks because they do not receive the auditory sign stimulus as its parental behavior, अगर आप फोर्स करोगे, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है ना. आपने टर्की को जो भी आपने किया हो, सपोज दैट इसने जो व्हाटएवर द हेन, इसका जो चिकन हैच्ड आउट के बाद बाहर निकला, इफ यू विल फोर्स द टर्की
to know that you have to keep it as your mother because turkey shows that parental behavior. वो इसको kill कर देंगी because उनकी problem है, they cannot hear, but they will not accept it at all. The complete absence of visible stimuli. Next point. Internal state of an organism. Third point. Internal state of an organism. When one part of the total situation slash stimuli, when one part of the total situation or stimuli is not found effective for a particular response, it might have sign stimulus value. It might have sign stimulus value for another responses. What a stimulus, when a stimulus on which organism respond is actually the internal state of an organism. Is an actually internal state of organism. Example, herring gull settles on its eggs. However, the shape of the eggs become crucial feature. The egg shape, yes, shape of egg becomes crucial feature if the eggs, full stop, if the eggs do not have rounded smooth edges, the bird will frequently rise and resettle in a disturbed manner. Next, fourth point, last, effect of a stimulus strength. Last point, effect of a stimulus strength. Many alteration in sign stimuli may lead to effective respond and evolve accordingly the weaker or stronger response according to intensity of both stimuli and strength of an animal. According to intensity of both stimuli and strength of an animal. Tell me the example of it. What can be the example of it? In short, you have to tell me that what is the strength, like according to the different types of strength of stimuli. है ना? The animal respond differently. Just tell me the example. Humans में तो thousands हैं, but animals के sense में समझाना है.
Dogs in the sense of like what is the in the dog are responding, right? Auditory, how? Like what is the stimuli strength? So what is the stimuli strength? What you're trying to say that? Suppose that you have to write the example of it. So dogs are responding on a particular stimuli. Yes, that's truth. So what is the like what is the stimuli here? Auditory. Auditory में आप क्या change कर रहे हो बार बार? Like you are changing something, ना? That's how intensity is increasing or decreasing accordingly the animal is behaving. Right? Fear actually. आप उसी डॉग को प्यार से बात लाइक यू नो टॉक इफ यू टॉक इन अ पर्टिकुलर वे दैट एनिमल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली बट सेम योर पिट एनिमल है ना जैसे कि बुलडॉग्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है जो बुलडॉग होते हैं इफ दे रिकॉग्नाइज योर पर्टिकुलर टोन इफ यू इंक्रीज योर टोन है ना ऑन अ पर्टिकुलर सर्टेन लेवल ऑफ इंटेंसिटी दे विल रिस्पॉन्ड यू रिवर्स मैनर इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने बुलडॉग को पेट नहीं करने दिया है ना अभी बहुत सारे डॉग्स को उन्होंने क्या किया है हाँ क्योंकि सपोज दैट उनका ओनर है बिकॉज दे रिकॉग्नाइज जब आप किसी भी टाइप का पेट लेने जाओगे ना दे विल टेल यू द बुक स्पेशली जब आप बुलडॉग या पिटबुल इन सबको लेने जाओगे दे विल टेल यू दीस थिंग कि इफ यू आर सेटिंग अ काइंड ऑफ टोन प्लीज कंटिन्यू विद दैट अकॉर्डिंगली अगर सपोज दैट आप एक पर्टिकुलर स्पीड से पर्टिकुलर डॉग के साथ चल रहे हो दैट इज दे विल रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर इफ यू स्टार्ट स्पीडिंग they will respond differently. It's a movement. The stimuli is your movement. That why they do need to respond differently because of the intensity of your stimuli. तो आपका मूवमेंट आपकी लैंग्वेज ये सारी ही चीज मैटर करती है इसीलिए पिटबुल ने बहुत सारे स्टॉर्नर लोगों को या रास्ते चलते लोगों को कट किया है बिकॉज ईदर दे आर मूविंग वेरी यू नो फास्ट मे बी समवन इज क्रिएटिंग अ लिटिल लार्ज नॉइसेस सो दैट्स द ठीक है और सेम एग्जांपल Rottweiler, हाँ Rottweiler is also Rottweiler की तो grasping is very hard. If you will respond after grasping उनका जो mandible होता है उनका जो jaw होता है उसमें आपको respond बहुत मैटर करता है कि आप कैसे respond करो और उतनी ही वो tight hold बनाते जाता है. So yes, dog is one of the very good example. ठीक है चलो next make the heading. Yes. हाँ earthquake तो natural respond है obviously earthquake में जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे this is a true है ना they can recognize जैसे कि the animal can recognize almost a little vibrations too some of them when we talk about the sound ultrasonic subsonic and supersonic है ना ऐसे करके हम लोग साउंड पढ़ते हैं so some animals actually respond in different way they get to know that आपने बहुत सारी ऐसी शॉर्ट वीडियोस या फॉरेन की कुछ देखी होंगी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से मतलब होने से पहले वो उनको रिस्पॉन्ड पता चल जाता है ना सो देयर इज अ डॉग उसकी एक ओल्ड ओनर थी कौन सी फिश क्या दिखाया था आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अर्थक्वेक आया था हाँ ये दिस इज वन ऑफ द पैटर्न बाय द लाइक इंटरनेशनल और मेट्रोलॉजिकल व्हाटएवर द डिपार्टमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दिस इज वन ऑफ द रिस्पॉन्स that even like some of the signaling or the movement even the tsunamis also so many animals behave differently in the different wave pattern so जनरली जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स है या ओशियनिक एनिमल्स है वो नॉर्मल पे रह रहे हैं है ना उनको क्या जरूरत है रिस्पॉन्ड करने की बट आफ्टर अ सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ देयर वेव एक्शन और मे बी द साउंड एक्शन जो आपके टेरेस्ट्रियल में रह रहे हैं जो आपके उसमें रह रहे हैं सो दे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली और उसके उनके एनिमल बिहेवियर को कवर पढ़ के हम लोग उसमें दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे दैट्स ट्रू ठीक है squirrels behave very weirdly when they feel that earthquake is coming squirrels have that kind of tendency dogs तो बहुत ही बेसिक है dogs पे तो हम लोग already there are so many studies ethology का this is also one of the aspect ठीक है हाँ वो तो खैर हाँ वो भी एक वन ऑफ द वे है लेकिन बारिश होने से पहले तो उसमें तो द थिंग इज अबाउट ह्यूमिडिटी एंड तो वो उसी मूवमेंट में आते भी तो है देखो फ्रॉग का जनरली हम लोग क्यों नहीं लिखते मतलब लिखने को जब कोई एग्जांपल नहीं आ रहा तो प्लीज पुट इट लेकिन फ्रॉग्स तो आते ही उसी मूवमेंट अभी हम लोग फ्रॉग देख रहे हैं है ना सो ये तो उनका एक बिहेवियरल पैटर्न हो गया साइन स्टिमुलाई में रिस्पॉन्ड जैसे कि उस एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी रह रही है फ्रॉग्स तो आते ही मॉनसून में तो ऑब्वियसली उनका क्लॉकर एंड ये सब डिपेंड करेगा इसमें एक एग्जांपल ये है कि फ्रॉग क्लोक्स नॉर्मली ठीक है बट व्हेन दे क्लॉक टू अट्रैक्ट द फीमेल उनकी जो लाउडिंग स्पीड हो जाती है दैट डिफरेंस
है ना, और अकॉर्डिंगली द फीमेल फ्रॉग्स रिस्पॉन्ड। ये इसका बेटा एग्जाम्पल है। ऐसा तो नहीं है कि फीमेल और किसी भी एनिमल्स का, जैसे कुकू में नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि उनमें कंसिडर करना, जैसे कुकूज में दे हैव द डिफरेंट साउंड, पर डिफरेंट की बात हम लोग नहीं करेंगे, डिफरेंट द फिल्ट्रेशन आ गया, है ना। जैसे कि सपोज दैट इफ एनी एनिमल कोई एक ही साउंड ऐसा प्रोड्यूस कर पाता है और उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंगली देयर पार्टनर, और जैसे कि स्टेकल बैक, है ना, इसमें भी अलग है, फिर भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है। अगर पर्टिकुलर, द थिंग इज ओनली यू हैव टू राइट द पर्टिकुलर साइन having that उसी particular sign पे the up or the down intensity is increasing or decreasing and the other animal or something responding like that। जैसे कि ऐसा नहीं हमेशा थोड़ी बहुत अर्थ मूव होती है और हमें फील होती है, लेकिन हम लोग हमारी जो पीच हमारी जो स्केल है आपकी अर्थक्वेक मेजर करने वाली, उसमें हम एक पर्टिकुलर के टाइम के बाद ही कंसीडर करते हैं कि दिस इज द अर्थक्वेक व्हिच एक्चुअली रिकॉग्नाइजेबल। ठीक है, सो दैट इज योर इंटेंसिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेक द हेडिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइमेट्स। लास्ट इस टॉपिक का सोशल ऑर्गेनाइजेशन या हायरार्कीज इन प्राइमेट्स। व्हाट आर द प्राइमेट्स? पहले तो ये पता होना चाहिए एग्जांपल्स कितने हैं, है ना। व्हाट आर द प्राइमेट्स? ह्यूमंस के एंसेस्टर इन शॉर्ट, isn't it? Ape, monkey, gorillas, they all are the primates. ठीक है, so when we classify the mammals, है ना, they are also the mammals. So when we classify the mammals में आपके ओडोंटोफोर, फिर हेर्बिवोर, बहुत सारे आते हैं, फिर आपको प्राइमेट आता है। प्राइमेट में वी एक्चुअली डिवाइड दैट फैमिली, उसमें हम लोग होमिनिडी फैमिली करते हैं फॉर दैट ह्यूमंस, और एक हम लोग करते हैं जिसमें प्रॉपर आपके एप, गोरिल्लाज सब कुछ है। ठीक है, रेडी रहो। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइमेट्स। Primates are known to live in large groups. Primates are known to live in large groups. Full stop. They are marked by large body size, large body size, large brain size, large brain size, and diurnal behavior, and diurnal behavior. Full stop. The social organization in primates. अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे क्या? ये तो हम लोग जस्ट इन्फॉर्मेशन लिखने जा रहे हैं। क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में? यस, बताओ अनुष्का क्या लिखना है? ओके, so you are going to define the primates first. This is a 50 marker question, this is not your 10 marker question. थोड़ा और लिख सकते हैं, कितना ही डिफाइन कर लोगे प्राइमेट्स में? So how we see that, how to write the introduction, Anushka? There is a two terms. The one term is social organization and second term is primates. So first define very accurately what is a social organization. This is simple, a group of animal performing the different social responsibility or the different responsibility in that particular group, so that there's a division of labor. Then connect the primates. Primates are the, फिर आपको connect कर सकते हो, that primates are one of that large body size animal who generally lives in the group and perform the different kind of activity. या primates are one of that animal who shows that one of the best social organization before that human organization, है ना, humans के पहले। Define both of them. यहाँ तो हमने सीधे information लिखनी शुरू कर दी, ठीक है। Social organization primate has been made to increase survival, cooperative predator avoidance, comma, ready access to mates, comma, kin selection, and thermoregulatory behavior, behaviors. Full stop.
Their social organization structure is quite complex, where generally the females making up center of the organization, where the females making up the center of the organization, center organization. The male young ones have a high probability. The male young ones have a high probability of leaving the group, while females generally live in the same group. Stryer defined the primate social organization as which reflects the compromises between the females and males, between the female and male strategies to gain access to mates, food, and other resources that they and their offspring need to survive. Full stop. इसी में कंटिन्यू करना है डेफिनेशन में. These compromises are constrained by life history and physiology, and vary with ecological and demographic conditions. सफिशिएंट है इतना इंट्रोडक्शन या उसको कंसाइज करके लिखने के लिए? ठीक है. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, just give it like that. If you have the sufficient content to write something in the introduction, then write something in the introduction to define both of these things. And when you start writing the body, just make it heading that social organization and primate, which was ऐसे करके लिख लो जैसे अपने introduction में suppose that you have defined a social organization and primates in a very short way, like four to max 4 to 5 lines. ठीक है. फिर आप body में we have already talked about after writing the introduction, you have to make a proper heading to show that your introduction has been completed. Do not write like introduction सबसे पहले तो heading नहीं बनानी होती है ना. Just like you have completed the introduction in maybe 4 to 4.5 line, and again you have started that writing in the body. The examiner will consider all of these things in the introduction if you are not making the heading. और वो आपको ऐसे ही marks देगा. So better whenever you are writing any structure, any other GS papers too, इंट्रोडक्शन फिनिश करने के बाद जो भी आप लिखना चाह रहे हो, मेक इट हेडिंग टू टेल देम दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट बॉडी. तो यहाँ पे आप कैसे डेफिनेशन लिखोगे? या तो आप इफ यू हैव डिफाइंड दिस स्ट्रायर का, ऑल्दो इट्स वेरी बिग, बट इफ यू हैव डिफाइंड इन द इंट्रोडक्शन क्वाइट ओके, क्वाइट एनफ, देन मेक द हेडिंग टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइमेट्स, और मे बी यहाँ पे अगर इसको अगर लिख रहा हो तो सिंपल मेक इट हेडिंग डेफिनेशन. ठीक है. राइट डाउन टाइप्स. The different types of social organization नहीं लिखना है मतलब. First देखो सीधे solitary types. First solitary primate system.
dash. This is the first type. This pattern is rare in primates. This pattern is rare in primates where single female and their offsprings live together. Where single female and their offsprings live together. The male generally comes only for mating purposes. Only for mating purposes. Full stop. In this structure, बचपन में डिस्कवरी देखी है, ऐसी बताता है ना वो, है ना? In this structure, है ना? डिस्कवरी में ऐसे बताता है ना? इधर हिंदी इंग्लिश. In this structure, male have a large area with many female living. आजकल तो सारे चैनल्स पेड हो चुके हैं, है ना? इनिशियल ऐसा नहीं था. इनिशियल वाज द काइंड ऑफ द सेटअप बॉक्स. हाँ, एवरीथिंग वाज अ फ्री. इट्स गुड. नाउ यू हैव टू चूज इट व्हाट यू वांट टू सी. हाँ, कार्टून भी चले गए. लिटरली बेन 10. या इट इज वेरी लिमिटेड. वाईफाई तो अभी आगे. हम लोग जब अपने स्कूल टाइम पे थे, वी यूज्ड टू नॉट हैव दैट वाईफाई एंड दिस एंड दैट. एवरीथिंग वाज लाइक स्कूल से आए और टीवी चला दिया और बैठ गए, लाइक दिस ओनली. या तो न्यूज चैनल चल रहा है, या तो कार्टून, या तो डिस्कवरी. चलो, अच्छा, which type of good it is? Which type of goods it is? So one is a public good, which is accessible to all. So the two characteristics, that is a non-rivalrous and non-excludability. The second type of good, जैसे कि आपके रोड वोड है ना, आप सब लोग उसको यूज करोगे, कोई वो नहीं, because public good is something your taxation. Then which type of good is this? Wi-Fi, satellite, इकोनॉमी का एक टर्म है. क्लब गुड्स, है ना? दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं है, मतलब दे आर एक्सक्लूडेबल बट दे आर नॉन राइवलरस. दो टर्म है इकोनॉमी में. आप लोग की यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया. जब भी आप लोग गुड्स पढ़ना तो डिफरेंट गिवन गुड्स, क्लब गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पब्लिक गुड्स, इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं. राइट. In this structure, male have a large area with many female living. In this structure, male have a large area with many female living. Full stop. Young ones leave their mother. Young ones leave their mother once they attain puberty. Once they attain puberty. Example, loris, lemur, orangutan. Orangutan तो सब में ही आएगा लगभग. Orangutan has a diverse kind of behavior. Orangutan. ठीक है. Next, monogamous family group. Yes, this is a 15 marker question. It doesn't come in the 10 marker. It is a 15 marker question. I'll show when tomorrow we'll discuss now. I'll show you this question. Monogamous family group. This pattern has a one male. Mono मतलब single. Gamous मतलब gamete. मतलब there's a one couple. जैसे कि solitary में what we have said. Actually the female, and what is a group in that? There's a one female and there's a different child over there. That is a one group. इसमें क्या है? What is in the monogamous? One male, one female, and they are different child. ठीक है? That is the one group. That means male and female के साथ होगा. That is why when we have talked about the social organization, we have said that female is the center of that organization. Single female रहेगी. उसमें males आते हैं. That is why ये जो पूरी टेरिटरी कंसीडर करी जाएगी, इसे कंसीडर करी जाएगी. Although वो डिफरेंट टाइप होगा कि ये जो ग्रुप है, इसमें जो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बेटर से लाइक दैट, वॉट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, it's only burdened by or taken by the single female. The male comes only for the mating purpose. It doesn't take care of all the responsibility, जैसे कि protection and ये generally like that. इसीलिए orangutan की एक species है, बी से उसका कुछ नाम है. उनकी जो females होती हैं, they are very very aggressive because they perform such kind of solitary grouping.
ठीक है, ऑब्वियसली द फीमेल हैव टू बर्डन एवरीथिंग, सो ऑफेंसिव, डिफेंसिव, प्रोडक्शन सब कुछ इसी को कंसीडर करना है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी होते हैं, उनके बेबीज भी होते हैं, बिकॉज इफ द फीमेल इज गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ फूड और समथिंग लाइक दैट, दे हैव टू बिकम एग्रेसिव। ठीक है, चलो राइट इट डाउन। Monogamous family group. This pattern has a one male and one female with their offsprings. Gamma word actually coming from the term gamma. Gamma is actually the marriage in one of that language. समझ आया? इसलिए इसका मतलब यहाँ पे one gamete नहीं है, like one female ही, that's one gamma मतलब one marriage. The one male and one female with their offsprings. Full stop. Once the young ones grow, once the young ones grow, they leave the group, they leave the group to start their own family. ये ह्यूमन वाली फैमिली की जैसे, ठीक है, to start their own family. This is quite analog, full stop. This is quite analog to nuclear family of human beings. To nuclear family of human beings. Where, full stop, here, both the parents work and share their responsibility. Both the parents work and share their responsibilities, such as food collection, protection, ब्रैकेट में लिखो डिफेंस एंड ऑफेंस बोथ, nurturing, etc. Full stop. It is generally found in small Asian apes. It is generally found in small Asian apes and in New World monkey. Example, मतलब एग्जाम्पल आपका न्यू वर्ल्ड मंकी है, ये भी है, और मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ एवोल्यूशन, और आपके गिब्बन्स में भी ये होता है, गिब्बन शो सच काइंड ऑफ थिंग्स, न्यू वर्ल्ड मंकी एंड गिब्बन्स, मतलब इनके तीन एग्जांपल हैं आपके, एक एशियन एप्स में, दूसरे न्यू वर्ल्ड मंकी एंड थर्ड इज योर गिब्बन्स। चिंपैंजी में पेरेंट बदलते रहते हैं, आई डोंट, वो जो उसमें दिखा जाते हैं सर्कस वाले में, एक क्लोज उसके उसमें रखे ही दो रखे जा रहे हैं, दैट इज व्हाई they do not have the option. Next, polyandrous family group. Polyandrous family group. This type start with, there's a two word na, polyandrous and polygynous. What is the difference between both? Multiple male, gyne, female. Polyandrous, this pattern start with the monogamous group, generally with one male and female, first of, later a new male primate will join the group, and assist in rearing of child, food collection, etc. मतलब मेटिंग में अलाउड नहीं है, अदर एक्टिविटीज में अलाउड है, एंड फूड कलेक्शन एक्सेट्रा. But later on
but later on both males can mate with the female, but generally the second male is not capable of breeding. Second male is not capable of breeding. So their role in this organization is limited with taking care of young ones. Example, टर्मेरिन एंड मार्मोसेट. थोड़ा सा रेयर होता है प्राइमेट्स में, ठीक है, क्योंकि प्राइमेट्स आर द बिग लार्ज ग्रुप, सो जनरली दे डू नॉट कम ओनली फॉर द टेकिंग केयर ऑफ यंग वंस. ठीक है, नेक्स्ट पॉलीएंड्रस के बाद एग्जांपल मार्मोसेट, MARMOSET, मार्मोसेट एंड टर्मेरिन. थोड़ा सा रेयर होता है प्राइमेट्स. फोर्थ, नेक्स्ट लुक, polygamy family group. It is very common, not very common but yeah, quite frequent. Polygamy family group. जितनी भी आपकी कोर सिविलाइजेशन है ना, उसमें है फीमेल को ही प्रेफरेंस. जैसे कि आई डोंट नो यू गाइस नो दैट और नॉट, जितनी भी आपकी कोर लैंग्वेजेस है उन सब में शी ही नहीं है. हिंदी ऑल्सो द डेवलप्ड लैंग्वेज है ना, लाइक जितनी आपकी डेवलप्ड लैंग्वेज होगी, you will see that when somewhere if you will read some kind of interest of the reading article, I'll have some read article with a very authentic one. So जितनी भी आपकी मोस्ट डेवलप्ड होंगी उतना ही इसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा इन दैट मेल फीमेल समथिंग. जितनी भी आपकी ट्राइबल लैंग्वेजेस होंगी या कोर लैंग्वेजेस होंगी उसमें दिस इज नॉट समथिंग. जैसे कि इन हिंदी वी से दैट वो जाती है या वो खाती है, राइट. इन फीमेल वी से सी हर एंड समथिंग लाइक, बट आपकी कोर लैंग्वेजेस में इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता. दैट शोज की पहले के टाइम पे इतना वो नहीं था. जितना डेवलप होता जा रहा है उतनी ही फीमेल की वो कम होती जा रही है. ठीक है, पॉलीगैमी फैमिली ग्रुप. यू आर फ्रॉम ओडिशा, राइट? सो यू डू हैव द डिफरेंशिएशन दैट फीमेल और मेल. आई डोंट थिंक सो. है चलो, दिस पैटर्न हैज, सपोज दैट इफ यू हैव टू से समथिंग अबाउट द फीमेल, लाइक तो आप में ऐसा कुछ ग्रामेटिकल थिंग्स है सो to indicate that this is a female work or the male work. Nahi hai, because I heard about that Odisha or one more language, Odian and one more language. So, polygamy family group. This pattern has one male with multiple female. This pattern has one male with multiple female. Full stop. Primates form a social group. So you can understand Hindi very easily. Oh, so you know the Telugu too. This is the benefit of the South people, na? So they do know the multiple languages. This pattern has one male with multiple female. Full stop. Primates form a social group. Where the whole group is divided. Into multiple groups. Full stop. Generally male only mate with female of alpha/dominating group. आजकल की का लैंग्वेज है ना अल्फा मेल, एट दैट टाइम पे अल्फा फीमेल होती थी. alpha/dominating group. Full stop. They form a distinct mating
they form a distinct mating and child bearing group. And child bearing group, जैसे कि harem का जो concept है, if you have seen that, although I do not see that it's a very accurate or something like that, जैसे कि अकबर वाला एक एपिसोड कोई तो सीरियल आया था ना, अकबर जोधा अकबर, like that. So there is a similar kind of concept that is a harem. harem जिसको बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में. So harem में क्या होता है, there are multiple queens, है ना, like multiple queens नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे multiple female partners, but the queen is only one. जिसपे कि जो उसकी पहली वाइफ होती है या जो नेक्स्ट आने वाली वाइफ होती है, उस पे फाइट होता है कि who will be that constituting that harem. Generally अगर this is not something very disputable, so the older one or maybe the most sincere, अपने छात्र अपनी इधर भी है, there's a one king, उसमें भी इसमें multiple king वाला सिस्टम था. So that particular king is giving all kind of distribution or all kind of things, accessories to every female, but there's a one female who is going to take care, और maybe जिसका जो बेबी है या जिसका जो मेल चाइल्ड है, who is going to decide that further thing. हमारे मतलब ह्यूमंस में भी ये चीज था. So that kind of harem system is that polygamy. इसमें हनी बी में तो फीडिंग है यार विश्वा. हनी बी में is there something not deciding factor ना, उसमें तो फीडिंग डिपेंड कर रहा है कि if you are feeding that royal jelly, that will be the queen, है ना, otherwise everything will be that kind of thing. उसमें मल्टीपल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं. हाँ, देयर इज अ प्रॉपर डिवीजन की मतलब किस टाइप का ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, हनी बी या एंट्स या आपके टर्माइट्स, उसमें भी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स व्हाई प्राइमेट्स और उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग, ये आपका प्रॉपर डेवलप में आता है. सो दैट पर्टिकुलर किंग कैन हैव दैट सेंस और समथिंग लाइक दैट, सो दैट डिस्ट्रीब्यूट ऑल काइंड ऑफ. आप सारी फीमेल अगर देखो, अगर आप सबको इक्वल दोगे तो ऑब्वियसली उनमें क्या होगा, टसल होगा. सो देयर इज अ वन थिंग, देयर इज अ वन फीमेल, उसका जो होगा द मल्टीपल रोल विल बी देयर. ये सारी वुमेन को आपके कोर्ट में आना अलाउड नहीं है, बट दैट पर्टिकुलर वुमेन इज अलाउड टू एंटर इन द कोर्ट टू, है ना, मतलब उसका एक अलग मीटिंग. एनिमल्स में क्या है ना, मीटिंग इज द मेन पर्पस. सो मीटिंग और ब्रीडिंग एक के साथ ही मेनली होगी, और उसकी ही में भी उसका जो होगा वो दैट इज गोइंग टू बी डिसाइड कि क्या करना है फर्दर, राइट. दे फॉर्म अ डिस्टिंक्ट मेटिंग एंड चाइल्ड बियरिंग ग्रुप. क्या लिखा है, ये लिखा है ना. एग्जाम्पल, बबून्स, लंगूर, हाउलर मंकीज एंड गोरिल्लास. गोरिल्लास में बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है हाउलर मंकीज, गोरिल्लास, फुल स्टॉप. इसके नेक्स्ट हम लोग का एक ग्रुप और रह गया है, 2, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है. थैंक यू. कल बुक लेके आएंगे अपन, ठीक है. सो दैट मींस द सेकंड एंड फिनिश इट. इकोलॉजी में बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें बची नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज है वी विल सी टुमारो द पीवाईक्यू डिस्कशन थ्रू व्हिच वी कैन से कि अगर कोई टॉपिक छूटा है तो वी विल डिस्कस इन द टुमारो. अदरवाइज इकोलॉजी इज कंप्लीटेड. मंडे ऑनवर्ड्स वी विल कवर द इकोनॉमिक ज्योलॉजी, ठीक है. वेरी सिंपल. इकोनॉमिक ज्योलॉजी में कितने सारे हम बैठ के वो लिखेंगे, कल्चर, सेरिकल्चर, तो एक दो कल्चर अपन लिखेंगे, ठीक है. उसके बाद उसको प्रोवाइड करेंगे, कोई जरूरत नहीं फालतू का टाइम वेस्ट करने. Thank you guys.